Today I want to talk to you about the gospel of grace. आज मैं आप सबसे खुदा के फजल की इंजील के बारे में, खुशखबरी के बारे में बात करना चाहता हूं। We find that the gospel of grace was initially given by the ascended Jesus to Paul. हमें बाइबल में ये पता चलता है कि फजल की जो इंजील है ये इब्तदाई दौर में, शुरू में जो है वो पौलुस रसूल को दी गई। When the ascended Jesus appeared to Paul on the road to Damascus, he gave him the revelation of grace. यीशु मसीह जब आसमान पर चले गए, उसके बाद जब यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, दमिश्क की राह पर उससे बात की, तब यीशु मसीह ने उसको फजल की इंजील का मुकाशिफा दिया। So in the Bible, there's the book of Acts. In Acts chapter 20, verse 24, Paul talks about the revelation of the gospel of grace given to him by Jesus. एमाल बाब नंबर 20 आयत नंबर 24 में पौलुस कहता है कि मुझे जो फजल की खुशखबरी मिली है, ये मुझे यीशु मसीह से मिली है। In Acts chapter 26, verses 15 through 18, this gospel is the complete forgiveness of sins through faith in Jesus. एमाल बाब नंबर 26 15 से 18 आयत में वहां पर लिखा है कि ये जो फजल की इंजील है, ये गुनाहों की माफी की इंजील है। So in these verses, Jesus tells Paul that through faith we receive the forgiveness of sins. इन आयात में यीशु ने पौलुस को बताया कि हम ईमान जब ले आते हैं तो हमें गुनाहों की माफी हासिल होती है। Jesus tells Paul also that by faith we're made holy or clean or pure before God. यीशु ने पौलुस को ये भी सिखाया, बताया कि हम ईमान ही से पाक और कामिल होते हैं। Paul expounds on the gospel of grace in Romans. पौलुस ने मसीह के फजल की इंजील को खुलकर बयान किया है रोमियों के खत में। In Romans, he says that the law convinces everybody that they're sinners. रोमियों के खत में वो कहता है कि शरीयत जो है वो सब लोगों को इस बात पर आमादा करती है, सब लोगों को इस मकाम पर लाती है कि वो जान जाएं कि वो गुनहगार हैं। Paul also says that the law convicts everybody of sin. पौलुस ये भी कहता है कि शरीयत जो है हर इंसान को ये बताती है, जाहिर करती है कि तुमने गुनाह किया है। The law is a standard of behavior. शरीयत जो है ये रवैये का मेयार है, रवैये का मेयार। Thou shalt not steal, shalt not lie, तुम shalt चोरी ना not करना, covet. तुम झूठ ना बोलना, तुम लालच ना करना। These are just some of the laws. ये सिर्फ उस शरीयत के कुछ कवानीन है, कानून हैं। One of the laws is thou shalt not commit adultery. उन कवानीन में से एक कानून ये है कि तू जिना ना करना। Jesus said that if anybody has lust in their heart, they've committed adultery. यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर कोई शख्स किसी चीज का अपने दिल में लालच करता है तो उसने जिना कर लिया। Jesus said if we've had anger in our heart, we've committed murder. यीशु ने कहा अगर हमने अपने दिल में गुस्सा रखा, गुस्सा किया, तो हमने कत्ल किया, यानी हमारा गुस्सा जो है वो कत्ल के बराबर है। One of the laws is thou shalt not covet. और एक कानून ये है, शरीयत के बहुत से कवानीन में से एक कानून ये है कि तू लालच ना करना। Coveting is wanting something somebody else has. और लालच का मतलब है कि ऐसी चीज की चाहत करना जो आपकी नहीं है, जो किसी और की है, लेकिन आप पाना चाहते हैं वो चीज। So the law shows us that we're all sinners. तो शरीयत जो है वो जाहिर करती है कि हम सब गुनहगार हैं, कोई भी पाक नहीं है। We've all broken the law. हम सब ने शरीयत को तोड़ा है। The penalty for breaking the law is death. और शरीयत को तोड़ने की जो सजा है वो मौत थी और मौत है। But we find out in the book of Romans that while we were yet sinners, Jesus died for us.
और हमें रोमियो के खत में मिलता है कि जब हम अपने गुनाहों में मुर्दा ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। Through faith in Jesus, we receive the forgiveness of sins. यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम गुनाहों की माफी को हासिल करते हैं। And the book of Romans also tells us और रोमियो के खत में ये भी लिखा है that through faith in Jesus, we become innocent as if we've never sinned. कि यीशु मसीह पर जब हम ईमान ले आते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमने कभी गुनाह किया ही नहीं, ऐसे मासूम, ऐसे रास्तबाज, ऐसे राइचस हो जाते हैं कि जैसे हमने कभी भी गुनाह नहीं किया। This is the gospel of grace. और यही खुदा की खुशखबरी, जिसे मसीह के फजल की खुशखबरी कहा जाता है, यही फजल की खुशखबरी है। It's the good news that through faith in Jesus, we become righteous before God. ये ऐसी खुशखबरी है जिसमें हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदा के सामने रास्तबाज ठहरते हैं। And we become righteous by faith in Jesus. और हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर ईमान से रास्तबाज ठहरते हैं। And righteousness is complete forgiveness and complete innocence. और जो रास्तबाजी है वो मुकम्मल तौर पर गुनाहों की माफी है और मुकम्मल तौर पर मासूमियत का इजहार है, या मुकम्मल तौर पर मासूमियत है। There's a book in the Bible called Galatians. और बाइबल में आपको एक और खत मिलता है जो पौलुस ने लिखा, गलतियों के नाम। And this book is about a group of people who heard the gospel of grace from Paul. और गलतियों को जो खत लिखा गया पौलुस की जानिब से, ये इसलिए लिखा गया क्योंकि उन्होंने खुदा के फजल की खुशखबरी को सुना था। But after hearing the gospel of grace from Paul, और पौलुस से फजल की इंजील को सुनने के बाद another group of people came into Galatia, which is where they lived, and taught another gospel. एक और ग्रुप आया और उसने आकर गलतियों की कलीसिया को कोई और दूसरी इंजील जो है वो मुतारुफ कराई और उनको वो इंजील सुनाई जो कि फजल की इंजील नहीं थी। So Paul writes about this in Galatians chapter 1, starting in verse 6. He और says, पौलुस ने गलतियों पहले बाब और उसकी 6ठी आयत में उस कलीसिया को उनको खत लिखते हुए यूं कहा, and Paul says, starting in verse 6, I'm astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. गलतियों 1:6 में लिखा है, पौलुस उनसे कहता है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कद्र जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। He goes on to say, which is really no gospel at all. और वो आगे यूं कहता है कि कोई और इंजील है ही नहीं। जब उसने आगे मजीद बात की तो उसके कहने का मतलब ये है दूसरी कोई इंजील है ही नहीं। And so what we see is these other people were coming into Galatia preaching a different gospel than what Paul taught. तो हमें इस खत से पता चलता है कि गलतियों की कलीसिया में एक और तरह का ग्रुप आया और उसने एक और तरह की इंजील उस कलीसिया में फैलानी सुनानी शुरू कर दी। So what's the difference between the gospel that Jesus told Paul to teach people इंजील में क्या फर्क है जो एक तो पौलुस को दी गई यीशु मसीह की तरफ से and the gospel that these other people were teaching? What's the difference? और दूसरी इंजील जो कि असल में इंजील ही नहीं है, दूसरे ग्रुप की तरफ से उस कलीसिया में जो सुनाई जा रही थी, फैलाई जा रही थी, इन दोनों अनाजील में क्या फर्क है? एक वो जो यीशु ने पौलुस को दी और दूसरी वो जो वो ग्रुप और तरह की इंजील कलीसिया में सुनाने की कोशिश कर रहा था। Just as a reminder, the message that Paul taught came to him from the ascended Jesus. आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं
कि पौलुस जो इंजील सुना रहा था, जिस इंजील की मुनादी कर रहा था, असल में वो मुर्दों में से जी उठे यीशु की तरफ से उसे मिली थी। Paul writes about this in Galatians chapter 1, verses 11 and 12. पौलुस ने ये बात गलतियों पहले बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में की है। So the people of Galatia were moving away from the gospel of grace. तो गलतियों की जो कलीसिया थी वो खुदा के फजल की, मसीह के फजल की इंजील से फिर रही थी, दूसरी जानिब जा रही थी। And they were going to a gospel of works. और वो ऐमाल की, कामों की इंजील की तरफ जा रहे थे। Paul writes about this in Galatians chapter 2, verse 21. पौलुस ने गलतियों 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में इसका जिक्र किया है। Paul writes, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. गलतियों 2:21 में पौलुस कहता है, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना बेकार होता, अबस होता। So those preaching a different gospel तो वो लोग जो थे वो किसी और तरह की खुशखबरी की मनादी कर रहे थे, said that righteousness और ऐसे लोग ये कहते हैं कि रास्तबाजी came by obeying the law शरीयत पर अमल करने से मिलती है, rather than by faith in Jesus. और ये सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से नहीं होता। That's a false gospel. और ये झूठी और गलत इंजील है। The only way we can be forgiven and innocent before God एक ही रास्ता है जिसके जरिया से, एक ही तरीका है जिसके जरिया से हम खुदा के सामने रास्तबाज और मासूम ठहरते हैं, is by faith in Jesus. वो ये है कि हम यीशु पर जब ईमान ले आते हैं तो हम रास्तबाज और मासूम ठहरते हैं। So when we try to make ourselves right with God, तो जब हम अपनी कोशिश से खुदा के सामने रास्तबाज होने की, पाक होने की कोशिश करते हैं अपने एमाल से, through religious activity or morality, अपनी मजहबी सरगर्मियों और अपनी अखलाकियात, अपनी इखलाकी चीजों, एमाल के जरिया से, we're not depending upon Jesus, but we're depending But upon ourselves. बजाय इसके कि हम यीशु पर इन्हिसार करें, बल्कि हम खुद पर इन्हिसार करते हैं। If we could be righteous before God through our own works, अगर हम अपने कामों से, अपने एमाल से, अपने इखलाकियात से खुदा के सामने रास्तबाज हो सकते हैं, then Jesus didn't need to die on the cross. तो फिर यीशु को सलीब पर मरने की जरूरत ही नहीं थी। Those teaching a false gospel जो इस तरह की इंजील सुनाते हैं कि एमाल से आप रास्तबाज होगे, शरीयत पर अमल करने से रास्तबाज होगे, ये गलत और झूठी इंजील है। tell other people दूसरों को बताते हैं that to be right with God or righteous before God, कि खुदा के सामने रास्तबाज होने के लिए they have to have works. आपको अमल करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। Some may say शायद कुछ कहते हों it's faith and works. कि ये ईमान और एमाल से है, So it's a little bit of Jesus and a little bit of me. यानी थोड़ा थोड़ा यीशु से और थोड़ा थोड़ा मैं, और इस तरह हम मिलकर जो है वो निजात का काम मुकम्मल करते हैं और मुझे निजात मिलती है, एक शख्स को निजात मिलती है। That too is a false gospel. और ये भी झूठी इंजील है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा यीशु काम करता है, थोड़ा सा आप काम करते हैं, यीशु पर ईमान लाते हैं और फिर आप अमल करते हैं, फिर आप निजात पाते हैं। ये भी झूठी इंजील है। The true gospel, it's all Jesus and none of me. Praise God. जो सच्ची इंजील है वो ये है कि सब कुछ यीशु से है और यीशु ने किया है और मुझसे कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करना निजात के लिए।
and we place our faith in Jesus alone. और हम सिर्फ अपना ईमान यीशु पर रखते हैं। So in Galatians तो गलतियों में chapter 2 verse 20 and 21, तो गलतियों में बाब नंबर 2 आयत नंबर 20 और 21 में Paul writes these words, starting with verse 19. पौलुस यूं कहते हैं, हम 19वीं आयत से शुरू करेंगे। For through the law I died to the law so that I might live for God. चुनाचे में शरीयत ही के वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। So Paul died to living according to the law. तो पौलुस जो है वो शरीयत के एतबार से मर गया So that he could live in relationship with God. ताकि वो खुदा के साथ रिश्ते में जिंदगी गुजार सके। Paul writes in verse 20, 20वीं आयत में पौलुस कहता है, I have been crucified with Christ and I no longer live. मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, But Christ lives in me. बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। The life I now live in the body, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, I live by faith in the Son of God, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, who loved me and gave himself for me. जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। So the way that we live तो जिस तरह हम जीते हैं is by faith in Jesus, वो तरीका ये है कि हम ईमान से जीते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाकर जिंदगी बसर करते हैं, who loved us जिसने हमसे मोहब्बत की है and gave himself for our sins. और अपने आप को हमारे लिए मौत के हवाला कर दिया ताकि हम गुनाहों की माफी हासिल करें। So it's not faith in my works, तो इंजील ये नहीं है कि मुझे अपने एमाल पर ईमान लाना है, it's faith in his work on the cross. बल्कि यीशु मसीह के काम पर, उसके सलीबी काम पर ईमान लाना है। इससे निजात है, ये खुशखबरी है। Some people will try to trick you. कुछ लोग आपको धोखा देने की, आपको फरेब देने की कोशिश करेंगे। They will tell you it's partially Jesus and his work and partially you and your work. वो आपको इस तरह की इंजील सुनाएंगे कि थोड़े से आपके एमाल और थोड़े से यस्सु के काम जमा हो जाएंगे जब उसके बाद जो है आप निजात पाते हैं। इस तरह की इंजील को वो सुनाते हैं, थोड़ा सा यस्सु काम करता है, थोड़ा सा आपको काम करना है। ये झूठी इंजील है। But if it's any of my works, then Jesus doesn't need to go to the cross and die for my sins. और अगर ये मेरे और आपके एमाल से होता तो फिर यीशु को सलीब पर जाकर मरने की जरूरत ही नहीं थी। So don't let anybody trick you. तो किसी को भी इजाजत ना दें कि वो आपको धोखा दे, आपको फरेब दे। You know you're hearing a false gospel आपको सुनने से पता चलना चाहिए कि कौन सी गलत इंजील, झूठी इंजील है, when you are told जब आपको ये बताया जाएगा it's Jesus plus something. कि ये अगर आपने निजात पानी है तो यीशु जमा कुछ और, आपके एमाल, आपके कामियां कुछ और, फिर आप निजात पाओगे। The true gospel is faith in Jesus plus nothing. सच्ची इंजील ये है कि यीशु पर ईमान लाओ प्लस उसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ ईमान लाओ और निजात पाओगे। In the book of Galatians, गलतियों के खत में chapter 4, गलतियों 4 बाब में Paul writes these words starting in verse 4. चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। पौलुस यूं कहता है, But when the time had fully come, God sent his son, Jesus,
born of a woman, that's Mary, born under the law, that's the 10 Commandments and all the laws of the nation of Israel, to redeem or set free those under the law, that we might receive adoption as sons. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Amen. गलतियों 4 बाब और उसकी 4 आयत से, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ यानी मरियम से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, शरीयत यानी 10 हुक्मों के मातहत और बाकी सारी शरीयत के मातहत, ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। आयत नंबर 6, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है। आमीन। So through faith in Jesus, not only are you forgiven, तो यीशु मसीह पर ईमान लाने से ना सिर्फ आपके गुनाह माफ हुए हैं, not only are you righteous and innocent, और ना सिर्फ आप रास्तबाज या मासूम ठहरा दिए गए हैं, but Jesus lives in you by his Spirit. बल्कि अपने रूह से यीशु खुद आपके अंदर रहता है। And you now call God your Abba Father, your daddy, your papa. और अब इसीलिए आप खुदा को अपना अब्बा, ए बाप, डैडी, पापा कहकर पुकार सकते हैं और पुकारते हैं। This is a love relationship that God now has with you. ये मोहब्बत पर मबनी रिश्ता है जो खुदा का और आपका रिश्ता है। असल में ये मोहब्बत पर मबनी है आज। So now we live in relationship with God, a love relationship. तो आज हम खुदा के साथ मोहब्बत पर मबनी रिश्ते में जी रहे हैं। Not a list of rules, but a love relationship. कवानीनों ज़वाबत या शरीयत के कानून पर हुक्मों के मुताबिक नहीं, उन पर मबनी रिश्ता नहीं है हमारा, शरीयत पर मबनी रिश्ता नहीं है, बल्कि मोहब्बत पर मबनी रिश्ता है। Not a list of requirements, but a love relationship. तकाज़ों की शरीयत पर मबनी रिश्ता नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पर उसकी कुर्बानी पर मबनी रिश्ता है। Not a list of rituals, but a love relationship. ये रस्मी रिश्ता नहीं है, रस्म पर मबनी रिश्ता नहीं है, बल्कि मोहब्बत पर मबनी रिश्ता है। And it's the Spirit of Christ in you that allows you to call God your loving Father. और ये खुदा यीशु मसीह की रूह जो आपके अंदर है, आपको इजाजत देती है, आपकी रहनुमाई करती है कि आप खुदा को अपना अब्बा, अपना बाप कहकर पुकार सकें। So don't let anybody tell you इसलिए किसी को भी इजाजत ना दें कि वो आपको ये कहे that you have to follow rules. कि आपको पहले हुक्मों पर अमल करना है, ताबिया फरमानी करनी है। Don't let anybody tell you that you have to fulfill the requirements. और किसी को ये भी इजाजत ना दें कि वो आपको ये कहे, ये सिखाए कि पहले तुम्हें ये तकाजे पूरे करने हैं, ये काम करने हैं। Don't let anybody tell you that you have to fulfill the rituals. और किसी को ये भी इजाजत ना दें कि वो आपको ये कहे कि आपको पहले रस्म कोई रस्म, कोई रिवाज, उसको फॉलो करना है, उसको पूरा करना है। Jesus set you free. यीशु ने आपको इनसे आजाद कर दिया है। He set you free from rules. उसने आपको कवानीनों ज़वाबित से आजाद कर दिया है। He set you free from rituals. उसने आपको रस्मों से आजाद कर दिया है। He set you free from requirements. उसने आपको सारे के सारे तकाजों से, शरीयत के सभी तकाजों से आजाद कर दिया है। He set you free to know God as your loving Father. उसने आपको आजाद किया है ताकि आप खुदा को जान सकें ऐसे बाप के तौर पर जो आपसे मोहब्बत करता है। Your loving Father, God, is patient. जो खुदा आपका बाप है, आपसे जो प्यार करता है, वो सब्र करता है, सब्र रखता है।
He's kind. वो मेहरबान है, He's good. वो भला है, He's faithful to you. वो आपसे वफादारी करता है, वो वफादार है आपके साथ। He's full of joy in calling you his son or daughter. और जब वो आपको अपना बेटा या बेटी पुकारता है तो वो खुशी से भरा हुआ होता है जब वो आपको ऐसा कहता है, बेटा, मेरी बेटी। He loves you so much. वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। He doesn't get angry with you. वो आपसे गुस्सा नहीं होता, आपसे नाराज नहीं होता, He doesn't get mad with you. वो गुस्सा नहीं होता, He's full of peace to you. वो आपसे सुलह रखता है, अमन रखता है, मोहब्बत रखता है। As we experience God's love, जैसे ही हम खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं, we'll begin to express that love to others. फिर हम वही मोहब्बत दूसरों से जाहिर करना शुरू कर देते हैं, वही मोहब्बत दूसरों से बांटते हैं। And love doesn't need a law. और मोहब्बत को शरीयत की जरूरत नहीं है, Because if I love you, I won't murder you. क्योंकि मैं जब आपसे प्यार करता हूं, मोहब्बत रखता हूं, तो मैं आपको कत्ल नहीं करूंगा। If I love you, I won't commit adultery on my husband or my wife. कोई बीवी अपने शोहर से, कोई शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो वो उसके खिलाफ कभी भी जिना नहीं करेगा, किसी और के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं करेगा, क्योंकि वो मोहब्बत करता है। If I love you, I won't steal from you. अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपकी कोई चीज चुराऊंगा ही नहीं। If I love you, I'll be kind to you. अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो मैं आपसे मेहरबान रहूंगा, आपके साथ मेहरबानी से पेश आऊंगा। I'll be patient with you. मैं आपसे सब्र के साथ काम लूंगा। I'll be good to you. मैं आपके साथ अच्छा हूंगा, भला हूंगा, I'll be faithful to you. और आपसे वफादार रहूंगा। Love doesn't need a law. मोहब्बत को शरीयत की जरूरत नहीं है। That's why Paul says we're not under law, but under grace. इसीलिए तो पौलुस ने कहा कि हम शरीयत के मातहत नहीं, हम फजल के मातहत हैं। Under grace, we experience the love of God. फजल के मातहत हम खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करते हैं, And then we express his love to others. और फिर वही मोहब्बत जिसका हम तजर्बा करते हैं दूसरों से करते हैं, दूसरों से मोहब्बत बांटते हैं। And that's the gospel of grace. और यही फजल की इंजील है। अभी हम रोमियो 4 बाब और याकूब 2 बाब में जो ईमान और एमाल का जिक्र है कि ईमान बगैर एमाल के मुर्दा है, इस ताल्लुक से सीखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम ईमान से बच गए हैं तो हमारे एमाल भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर एमाल ही नहीं है तो हमारा जो ईमान लाना है मसीह पर वो बेकार है। हम इस ताल्लुक से सीखते हैं कि असल में याकूब यहाँ पर बात क्या कर रहा है। So we're going to be looking in Romans chapter 4 and James chapter 2. और इसके ताल्लुक से ना सिर्फ हम याकूब के खत से पढ़ेंगे, बल्कि हम रोमियो 4 बाब और याकूब 2 बाब, इन दोनों हवालों का मुलाहिजा करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। In James chapter 2, James says it's faith and works that makes a person right with God. याकूब बाब नंबर 2 में याकूब कहता है कि ये आपका ईमान और आपके एमाल हैं जो आपको खुदा के सामने रास्तबाज ठहराते हैं। That's James chapter 2 verses 23 and 24. और ये याकूब 2 बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा होगा। In Romans chapter 4, Paul says it's faith without works. लेकिन जब आप रोमियो बाब नंबर 4 पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि ये सिर्फ आपका ईमान है और इसमें आपके एमाल शामिल नहीं है, ईमान बगैर एमाल के जिससे आप रास्तबाज ठहरते हैं। Paul says if it's by our works and our faith, then we can boast about our works. पौलुस कहता है कि अगर ये हमारे ईमान और हमारे एमाल से है, दोनों से है, तो हमारे पास वजह आ जाती है अपने एमाल पर फख्र करने की कि ये हमने भी किया है, ये हमारे करने से हुआ है। But Paul says we only boast in the cross of Christ. लेकिन पौलुस कहता है कि हम सिर्फ यीशु मसीह की सलीब पर
फख्र करते हैं, उसके अलावा किसी चीज पर नहीं। The book of James is the very first book written after the resurrection of Jesus. यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जो सबसे पहला खत लिखा गया वो याकूब का आम खत था। It was written in AD 44. और ये एडी 44 में लिखा गया। Galatians was written in AD 50. गलतियों का जो खत है वो एडी 50 में लिखा गया। And Romans was written after the book of Galatians. और रोमियो का खत गलतियों के खत के बाद लिखा गया। The letter of James does not contain the full gospel of grace. और इसीलिए ये जो खत है याकूब का आम खत, ये खुदा के फजल की, मसीह के फजल की इंजील को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं करता, क्योंकि ये पहला खत है। The book of Romans contains the full gospel of grace. लेकिन रोमियो का खत जो है इसमें मुकम्मल तौर पर आपको फजल की वजाहत मिलती है, ये फजल से भरा हुआ खत है। The full gospel of grace was given to Paul, not to James. मुकम्मल फजल की इंजील जो है वो पौलुस को दी गई थी, याकूब को नहीं। James just provides a historical record याकूब जो है वो सिर्फ तारीखी हवाले दे रहा है, तारीखी वाकयात बता रहा है। The letter of James is a historical record that contains the transition from law to grace. It's a historical record that contains the transition from law to grace. याकूब का आम खत जो है ये आपको उन सारी तारीखी तब्दीलियों के बारे में बताता है जो शरीयत से फजल में आते वक्त हुई। वो सारी तब्दीलियों का रिकॉर्ड, हिसाब आपको याकूब के आम खत में नजर आता है। So in James, we don't have the full message of grace. इसीलिए याकूब के आम खत में हमें फजल की इंजील का मुकम्मल पैगाम नजर नहीं आता। But in Galatians and Romans, we have the full message of grace. लेकिन फजल की इंजील मुकम्मल तौर पर हमें रोमियो के खत में, गलतियों के खत में नजर आती है। So we find in Romans and Galatians तो रोमियो और गलतियों के खत में हमें पता चलता है that salvation or righteousness or justification कि निजात, रास्तबाजी जो है is by grace through faith apart from works. वो फजल से, ईमान के जरिया से है और एमाल के बगैर है। And that's what Romans chapter 4 is about. और रोमियो 4 बात इसी के बारे में है। James is about faith plus do. याकूब कहता है कि ये ईमान जमा एमाल हैं। Galatians and Romans is faith because it's already been done. और रोमियो और गलतियों के खत में आपको पता चलता है कि ये सिर्फ ईमान जमा यीशु ने जो किया मुकम्मल तौर पर वो है, आपके और मेरे एमाल से नहीं है। So through faith in Jesus alone, तो हम यीशु पर, सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से you're righteous before God. You're forgiven by God. You're accepted by God. तो सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से हम खुदा के सामने रास्तबाज हैं, माफ किए गए हुए लोग हैं और No कबूल works. किए गए हुए लोग हैं। या And that's no works. All grace. और ये आपके एमाल से नहीं बल्कि उसके फजल से है। Don't let anybody teach you a false gospel that says it's faith and works. किसी को भी इजाजत ना दें कि वो आपको गलत, झूठी इंजील सुनाए कि ये आपके एमाल से है और इसके साथ साथ आपके ईमान से। The true gospel is the gospel of grace. सही और हकीकी इंजील जो है, सच्ची इंजील जो है, वो खुदा के फजल की, मसीह के फजल की इंजील है, which is faith in Jesus alone. जो कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। And when you place your faith in Jesus,
और जब आप अपना ईमान यीशु मसीह पर रखते हैं, you are completely righteous, आप मुकम्मल तौर पर रास्तबाज हैं, completely forgiven, मुकम्मल तौर पर माफ कर दिए जाते हैं, completely accepted. मुकम्मल तौर पर खुदा की तरफ से कबूल कर लिए जाते हैं, Apart from works. और ये आपके अमाल के बगैर है। And that's the gospel of grace. और यही फजल की इंजील है।